Jai Jagannath, welcome back to our channel with a new video. Hope you all are doing good. Today's video is all about decimal. Decimal is a new word for you. I know. Also this chapter is new for you. Have you ever heard about decimal? I also don't know about this. But after teaching by my mother, it seems to be very simple and easy. पहले मुझे ये बताओ, आपको फ्रैक्शन अच्छे से आता है ना? डेसिमल के बारे में बताऊं, इससे पहले आपको फ्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए. नहीं आता है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करो एंड नो मोर अबाउट फ्रैक्शंस. So what is decimal number? A decimal number is a number having a whole number and a fractional part separated by decimal point. मतलब डेसिमल नंबर एक नंबर है जहाँ एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, पर दोनों एक डेसिमल पॉइंट से अलग लिखे जाते हैं. एक एग्जांपल है 24.36. यहाँ पर 24 होल नंबर है और 36 फ्रैक्शनल पार्ट है, पर वे दोनों के बीच में एक डेसिमल पॉइंट लिखा गया है. हम ऐसे पढ़ेंगे 24.36. 24.36 मत पढ़ना, ये रॉन्ग है. होल नंबर को कंप्लीट पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट के डिजिट्स को अलग अलग पढ़ेंगे. और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, उसे चलो पढ़ते हैं. 0.56, 12.03, 9.456 एंड 6.231. अभी सबको समझ में आ गया होगा डेसिमल नंबर्स को कैसे बोला जाता है. लेट्स नो अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट 12.345. Here let's partition this number in decimal point. The whole number parts numbers place values are written in ones, tens, hundreds, thousands like this. So place value of 1 is 110 equal 10 and place value of 2 is 2 ones equal 2. But the place values of the fractional part numbers are written as tens, hundreds, thousands. The place value of 3 equal 3 by 10 equal 3 tens. Place value of 4 by 100 equal 4 hundreds. Place value of 5 by 1000 equal 5 thousands. Remember, the place value of whole number equal to normal numbers, but the place value of fractional parts numbers always written in fractions. You can write the place values of a decimal number easily. Here are some questions that you have to find the place values of each number. This is all about introduction class of decimals. In the next class, we will study about like and unlike decimals. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना. मन में कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करना. प्लीज डू ए सब्सक्राइब इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज फॉलो मी एट इंस्टा @nsabest. थैंक्स फॉर वाचिंग.